हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप यू guys are doing well. So from the highlight and the video itself, you can see the place that we're going to visit. It's called SeaWorld Abu Dhabi. It's a newly opened, very nice theme park, just like in the Yas Island. वार्नर ब्रदर के साथ है फरारी वर्ल्ड. एक्चुअली जो सारे थीम पार्क हैं इन्होंने एक जगह पे बना दिए हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देन एवरीथिंग इज़ बेसिकली इज़ inaccessible. लेकिन ये जो पार्क था, ट्रस्ट मी, इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशंस. I didn't expect it's gonna be that much like of those sea life and this beautiful. You see how wonderful is that? ये बिल्कुल I don't know if you have seen it in the videos in Dubai Mall. They have this aquarium. So it's very similar to that. Like in this aquarium is more like into a tunnel, and then from the top you have all these sea creatures. Basically, they are passing by. Really nice, beautiful. So ये park जो है ना, इन्होंने different pavilions में एक किस्म का divide किया हुआ है. And then each pavilion and each area you can say has its own specialty, जहाँ पे वो different किस्म के sea creatures हैं, animated movies हैं, animated shows हैं. ये इनका बिल्कुल एक foyer है जहाँ पे एक main area जिसमें you can see all these videos and then the animated movies that they are showing you around. तो पार्क के अंदर ही बेसिकली मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, dolphin shows and you call it I mean many other rides that you can say. So all you have to do is just basically buy a park ticket. यहाँ पे multiple restaurants हैं अंदर, you can just go through all the places. And indoor इन्होंने एक वो garden बनाया हुआ है जहाँ पे you have all those parrots and everything, these birds, they are basically flying around as an open. So it was overall a nice experience. So stay in a video, we'll go through all these different places and we'll explore the park together. If you are planning to go, the park is most probably all indoor. स्पेशली में ये जो अंडरग्राउंड एरियाज़ हैं ये खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड होता है वहाँ पे to maintain the temperature. So you can just wear anything which is a little bit warmer even during winter or during summer. यहाँ का जो exciting चीज़ थी जो एक और what I liked beside all this was this roller coaster. I tried a roller coaster last time in Ferrari World Abu Dhabi, but this was also really nice, very fast and was very exciting. So this was one of the pavilion that I went inside, and you see how beautiful is it. Doesn't really look what's happening outside. Everything is basically nice, beautifully decorated inside. You have all those theme lights that are really enhancing the beauty of this place actually. During the high season, usually they have those all these kids cartoon characters where you can literally stand and watch all those shows for those cartoon character kids. They basically love this. And on the top, you can see there are a lot of playing areas, and you have all these rides that are basically included in your ticket price. लेकिन उसका इशू ये होता है बस कि जो फेमस राइड्स हैं वहाँ पे आपको क्यूज़ जो है ना वो अनलिमिटेड होती हैं. तो क्राउडेड था उस दिन ज़ाहिर है, तो लोग आई मीन आई जस्ट वेंट इनटू बेसिकली द राइड्स दैट आई रियली वांटेड टू ट्राई. लेकिन यह है कि क्यू के लिए फिर ज़ाहिर आपको वेट करना पड़ता है, एंड इट्स अ लॉन्ग वेट. स्पेशली अगर ये वीकेंड्स हैं या पब्लिक हॉलीडेज़ में आप अगर जाएँ तो it's gonna be a long queue. So it's better if you wanna explore the park and have a bit of everything, then you just go in a weekday when it's not crowded, and you need basically almost like 4 to 6 hours in order to explore the park, and actually longer than that if you wanna go through in each and every area of this place. तो ये देखें कितने खूबसूरत इन्होंने जो ना जो ओपन एरिया ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो ना इट्स रियली नाइस. वहाँ पे साइड्स पे बिल्कुल रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के. ये इन्होंने अंदर ही जो है ना उसके डॉल्फिन्स रखी हुई हैं, एंड दे आर सेपरेटेड द एरिया. आई थिंक ये बेबी डॉल्फिन्स हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है ना जो बड़ी वाली हैं. एंड देयर वाज एन शो, डॉल्फिन शो, वेयर दे वर बेसिकली entertaining all this audience. Was beautiful.
बड़ा क्लोजली आप जो है ना ये सारे इनके पास जा सकते हो, एंड दे आर ओके, वेरी वेरी फ्रेंडली। आई थिंक दे आर क्वाइट यूज्ड टू ऑफ पीपल टचिंग दैम, इवन यू कैन जस्ट टच दैम एंड दे आर ओके विद दैट, एंड देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। आप ऑब्वियसली कोई अपनी फूड वगैरह इनको फीड नहीं कर सकते, उनके अपने खाने वाने वहाँ पे पड़े हुए हैं, और उनके भी चोरी करके मत खाएं, यू नो, जस्ट लीव देम, डोंट ईट देयर फूड। सारा आर्टिफिशियली मेड है, लेकिन इट लुक्स वेरी नेचुरल, इट लुक्स वेरी नाइस। ये साइडों पे जो इन्होंने बनाया हुआ है, इट्स मोर लाइक स्टेडियम टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप ऊपर बैठ के जो है ना, इनका जो लाइव शो है डॉल्फिन्स का, वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है उनके, डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर वो डिफरेंट शोज़ करते हैं, तो यू कैन लिटरली सिट डाउन एंड वॉच ओवर देयर। अभी नया खुला है थीम पार्क, तो इट्स टेकिंग बिट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन द थिंग्स। अभी इतना ज़्यादा जो है ना लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन उस दिन वीकेंड था, पब्लिक हॉलीडेज थी, तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सो आई वेंट डाउन आफ्टर एक्सप्लोरिंग अ लिटिल बिट, देयर वर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट्स का ये है कि यू नो इट्स ऑल अबाउट द व्यूज़। आप वहाँ पे से खाना लें और देन लेटर यू जस्ट sit down and you just watch those sea creatures and sit next to them basically, and you can see all those fish and all this sea life that are going around you. One of my favorite part from this park was basically trying this roller coaster and also going into this penguin area. तो आगे आप वीडियो में देखेंगे, we'll go through this area where they have all these beautiful penguins. You feel like you're in Antarctica, लेकिन it's really nice. टेम्परेचर वहाँ पे ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा काफ़ी कोल्ड रखा होता है, लेकिन they have jackets around if you're really feeling cold. You can wear those thermal jackets, और आपको you know you'll be okay when you go inside, क्योंकि वो penguins के लिए शायद उन्होंने टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा मेंटेन किया होता है, लेकिन it's beautiful to watch them around and the funny चीज़ें and the funny you know actions that they basically take a place in that. So here after exploring the other side, I came into this area where they had all these penguins, and this was actually quite crowded than the other usual, especially for the kids. They love watching those. It was really nice, beautiful, quite cold again as I said, but they have these beautiful jackets or vests if you want to wear it if you feel cold about. तो उन्होंने थीम ऐसा मतलब इंडोर ऐसे लाइटिंग की हुई है, या रूफ्स उसकी टॉप्स ऐसी बनाई हुई हैं कि यू डोंट फील के व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड ऑफ द थीम पार्क। सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड, सो यू नो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, जैसा भी आप जिस पवेलियन में आए उस पवेलियन के हिसाब से दे हैव डेकोरेटेड इट एंड दे हैव थीम्ड इट, सो इट जस्ट मेक्स यू फील कि आप उसी एरिया में। सो नाउ हियर यू फील लाइक यू आर इन अ काइंड ऑफ विंटरलैंड और इन अंटार्कटिका वेयर हैव दोज penguins are basically walking around.
ईच पवेलियन के अंदर उन्होंने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं जो कि उससे थीम से मैच करते हैं या जो उस पवेलियन से मैच करते हैं। तो खाना जो है ना उधर जो है ना आपको डिफरेंट किस्म के फूड मिलेंगे बच्चों के लिए। दे हैव पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, and there are some Arabic restaurants as well, and the buffet as well. There is one restaurant that has a buffet, and the food is okay. I mean, I didn't really like it because I ordered this burger and fries, and I was not really okay. It was fine. It was not, maybe that was a bad choice of restaurant selection. So after that I actually went and took this ride twice. मज़ा आया, काफ़ी एक्साइटिंग थी and it's really fast. They ask you to remove everything, your any loose watches, you have any mobile phone with you and all that. You have to keep that on the side and then you have to take the ride. So I went first and then क्योंकि राइड पे इतना ज़्यादा रश नहीं था उस टाइम, and then I went again, took a ride, and I came back. I wanted to basically try sitting on the front seat to enjoy it from there. And then second time when I went, I managed to get the seat in the front. It was really nice and thrilling. And after that, I went on. There was this dolphin show. It was quite nice actually. For the first time, I mean, for me, it was very first time to see how they beautiful were they, and then just following the commands, whatever those were guiding, and they are wonderfully trained. I was surprised to see like how they are basically following whatever those trainers are basically telling the dolphins to do so. So after the show, it was already kind of an evening. There were multiple other things to be done on the day, but I was tired walking around all the time. But overall, it was very well they spent. The theme park is really beautiful, newly